नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और अपने कंप्यूटर में विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करें कि आपका पेन ड्राइव कम से कम 8 GB का है। पहले आपको रूफस जैसे टूल को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद टूल को खोलें और अपने पेन ड्राइव को चुनें। अब बूटेबल ऑप्शन में विंडोज का ISO फाइल चुनें और स्टार्ट पर क्लिक करें। कंप्यूटर को फॉर्मेट करें और विंडोज इंस्टॉल करें। अब जब हमारा पेन ड्राइव तैयार है तो अब हम देखेंगे कैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट करके विंडोज इंस्टॉल करें। अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और बायोस में जाएं। बूट मेन्यू से पेन ड्राइव को चुनें और फिर इंस्टॉल विंडोज पर क्लिक करें। आपको विंडोज के इंस्टॉलेशन प्रक्रिया का पूरा होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद आप अपने नए विंडोज सिस्टम का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं